So hello and welcome back once again. This is your favorite Captain Sokash. So finally, good news has come. I'll be joining from Singapore. So today is 23rd, guys. So today the video which I'm going to make is one of my friend with whom I have sailed. He's having 60 months of sea time experience. Working as AB on Maersk container vessel. Today we are going to ask him his journey sailing with Maersk container vessel, as well as he has recently done the sign off and finished with all the quarantine facilities. Now he is home quarantine. He is now at Sissaganj, that is situated at Agra. So guys, I'm going to call him by Skype and he will share all his experiences, signing off experiences coming from Lagos to India and what all he has done. And he will also tell you guys that how you can join Maersk, how he has joined, because he has sailed with me when I was cadet. He was OS that time, and he has sailed with me. I think we sailed together for 9 months, and he's very professional, guys, and very hardworking, and that's why he has attained his own rank at a very you can say at a very young age, when he was 23 or 24, guys. Now he is still sailing as AB and he want to pursue exams very soon, because he has taken 12th May PCM. So although he can do from India, but he's planning to go outside UK and do the exams, or else New Zealand or else Singapore. But that depends कि उसका कितना बजट होता है. इस टाइम पे आपको फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, guys. So do watch the video, and if you are new to this channel, please do like, share and subscribe. Okay, एक और चीज बताना चाहूँगा कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो मेरा जुड़वा भाई he'll be signing off from Singapore 31st, and first he will be here Mumbai and will be quarantined for 7 days. On the 5th day he is going to do the COVID test. If he is reported negative, then he'll come home, and there is no home quarantine required if you are at Mumbai. So this is all the procedure. So do watch this video till the end. It will be a good one, guys, who want to pursue as OSAB and then want to give further exams. So this will be very much helpful, and do share this video. It will be helpful to all. So Jai Hind, Jai Bharat, मित्रों. जो हमारे सामने बैठे हैं, ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी यंग गाय. ही इज करंटली सेलिंग विद मर्स्क, और इसके पास अभी फिलहाल 60 मंथ का सी टाइम एक्सपीरियंस है. बहुत ही यंग एज में इसने जो अपने पहले से गोल सेट किए हुए थे कि ही वांट्स टू परस्यू एग्जाम्स देना है इसने, तो हम इसी से सुनते हैं, इसी की वाणी. तो पहला सवाल मेरा ये है कि आपकी जर्नी फ्रॉम ट्रेनिंग ओएस से लेकर के जो आपने 60 महीने अभी सी टाइम दिया है जहाज पर, किस प्रकार की रही ट्रेनिंग ओएस से लेकर के एबी तक? एक्सपीरियंस ठीक था. यू हैव टू चूज टू थिंग्स इफ यू वांट बिकम अ गुड सीमैन. यू हैव टू फोकस योर करियर एंड फोकस योर गोल. वी आर सेल टुगेदर 14 months in Urayam. Then I am searching my companies, try to search 4 or 5 months, then finally get Maersk Line. I am lucky to sail with Maersk Line. Maersk Line is one of the best container company. Then I am continuously sailing. After 1 month, again join because I have to give exam and I am focus my career. Finally, I completed 16 months as a AV. First 5 months I am as a OS. Now, after last 3 ships, I am sailing as a AV, and now I am currently signed off from Maersk Kunene at Lagos Anchorage. With this COVID-19 things, very hard to sign off and get home safe. तो इससे मुझे पता चलता है कि आप अपने गोल के लिए बहुत फोकस हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर. आप एक इंस्पिरेशन हैं, बिकॉज आप बहुत यंग एज में आपने सेलिंग टाइम अपना सी टाइम किया है with
लाइक फर्स्ट आपने मेरे साथ सेल किया था, उसके बाद मस्क कंटेनर फीट, लार्जेस्ट कंटेनर फीट इन द वर्ल्ड, उसमें काम कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपने इस बार जो साइन ऑफ किया है लागोस में, कितने महीने कर लिए थे इस टाइम? मेरा साइन ऑफ मार्च 18 को था और कोरोना की वजह से अपना डिले होते होते मैं 2 जुलाई को साइन ऑफ किया। हाँ जी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कंपनी को, क्योंकि किसी का साइन ऑफ हो नहीं रहा है। चार्टर प्लेन अरेंज करना या वंदे भारत मिशन के तहत साइन ऑफ करना इज लॉन्ग प्रोसेस एंड company have to pay too much money for authorities, everything. Company has to pay lots of money. I am signed off without reliever because I have problem. That's why I requested to company to send me home. Then they now plan to crew change, huge amount of crew changes Lagos, because Lagos not allowed to crew change. Before normal time they are not allowed. Now they are allowed by charter plane. They are changing like a 200 crew at a time at Lagos Anchorage, because it's like half of crew must container vessel. They are anchoring like a 1 month at anchor at Lagos. Then they are get to berth. Very hard to get berth. It's delay like a. थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ गुड इन्फॉर्मेशन। तो आपने कितने महीने किए थे जहाज पर, लास्ट जहाज पर? 12 months 10 days. 12 months 10 days, तो 9 मंथ्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, राइट? तो आपने कैसे मतलब माइंड सेट किया, किस प्रकार से माइंड सेट किया? बिकॉज 3 मंथ्स, बिकॉज 9 मंथ्स भी हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो 12 मंथ्स मोस्टली जो कोविड के कारण मैंने सुना है 15 मंथ्स 14 मंथ्स पब्लिक कर रही है। तो किस तरह से माइंड सेट किया आपने कि भाई और थोड़ा कर लूँ, किस प्रकार से आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? It's very hard to set mind. If you set one time mind when you sign on vessel, then you plan, okay, I have to do 9 months. Then if this complete, then it's very stressful and very hard to complete one day also, because every day have workload, every day have some new things. You have to focus your job. राइट, आपने आपको मोटिवेट रखा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड information you are giving to the people, that you must get motivated by yourself, and when you believe you can. So because pandemic time most of the seniors they are getting trapped on board, तो आपने अपने आप को मोटिवेट कर रहा, that's a very good information. तो नेक्स्ट आपका साइन ऑफ लागोस में जो हुआ किस प्रकार था? किस प्रकार आप पूरे भारत से दिल्ली में पहुंचे, इंडिया? It's a long process. First you have to register in local embassy. Company registered my name to Indian Embassy in Lagos. Then they gave to High Commission in India. Then they send the link to book a flight. Then they arrange flight 3rd July. Then we have to pay full payment. Then they give you seat. Not like before, you have to like all details before 1 week or before 4 days or 5 days. This is recently, after you fly, before 1 day you get ticket and you get confirmation for you have seat or not, because it's very hard time to get any seats in flight. First I get flight ticket, then I signed off 2nd June from vessel by boat. It's very hard to 16 miles to get port, very rough weather and very hard. Then we reach hotel, stay 1 day in hotel. My flight 8:30 in evening time. We left hotel 12 o'clock more afternoon time. 8 hours too long process. First we get airport 12:30 after half an hour by taxi. Then they have to check thermal scanning, all your documents, medical test. Then High Commission collect your form for safe flight to travel. You are fit for travel by airlines. They give you, they collect you for like 4 or 5 hours. Then you have entered to boarding gate. Then you wait there 3 hours for flight. Long first you get, then flying 9.5 hours. Flying directly? Then Delhi also have too much long process. Flying directly
वंदे भारत में फ्लाइंग डायरेक्ट थी? Yeah, directly, this is a charter. This is flight by Indian government to direct Lagos to Delhi. No connecting flight. This is charter flight. Not और खाने में किस प्रकार का था? food was good. They are doing like and are also making like a social. They are giving PP all for. अच्छा, तो आप दिल्ली में जब जैसे ही पहुंचे तो वहां पर क्या क्या अरेंजमेंट की गई थी सीफेयर्स के लिए, और आपकी कंपनी के द्वारा क्या अरेंजमेंट की गई थी, और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ा? This is for not a seafarer flight. All Indians to stuck in Lagos, Benin. This is for Nigerian, like they go somebody going to business and they are staying studying there in Lagos. This is that flight. This flight not for crew. नहीं, तो आप दिल्ली पहुंचे तो क्या क्या हुआ आपके साथ, आप बताएंगे मतलब? First I get in Delhi, then they separated state wise. They separated state wise and they collected. Then you have to self-declare immigration and COVID-19. Then you have wait like a 4 hours. Then they call. Then they will like if you are UP and Haryana and Punjab, they are sending to directly your own state. And other people like Cochin, Mumbai, they are quarantined like 7 days in hotel, quarantine hotels, but they are not allowed for UP, Haryana and Punjab people to stay in Delhi. तो आप कहाँ पर क्वारंटाइन हुए थे और कितने दिन के लिए? I'm recently quarantined in my place, the government quarantine center, my town. आपने मुझे बताया था कि for 15 days. आपने मुझे बताया 5 days हेलो, आपने मुझे बताया था कि आपको क्वारंटाइन जो कंपनी का होटल क्वारंटाइन जो है वो दिया गया था, पर वहां जाके चेंज हुआ सब कुछ, राइट? Yes, they provide me 5-star hotel, quarantine hotel at Delhi, but UP government not allowed to stay at Delhi. Means Delhi government, they are sending to state. That's why I am staying in government quarantine center. After 5 days, they send me to COVID test, but report still not came. Still not came, अभी तक नहीं आई है? तो बाप रे बाप, तो अभी आप होम क्वारंटाइन है? 2 time take sample, but still not report. I am quarantine like a 6th July. हाँ जी। After 18, after 12 days, they send me at home to home quarantine. Still I am a home quarantine. होम क्वारंटाइन कितने दिन का दिया है? 14 दिन का? 14 days. जय हो गवर्नमेंट। जय हो गवर्नमेंट। तो ठीक है, ये तो बात रही कि आपकी जर्नी किस प्रकार थी। समझ के तो ये आ रहा है कि आपने बहुत डिफिकल्टीज फेस किए हैं, बट होप कि आप अपने आप को स्टेबल कर सकें, घर पर रहकर होम क्वारंटाइन अपने फैमिली के साथ खुशहाल रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है? क्योंकि आपने, मुझे पता है कि आपको अपने गोल को अचीव करना है, कि आपको COC चाहिए, तो आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? At that time, now all like a close, UK also closed, Indian Institute also closed. Then I'm looking forward to next year. Maybe things become normal, then I will do next year. नेक्स्ट ईयर पर आपने कहाँ के लिए सोचा है? मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? मतलब यूके के लिए सोचा है कि क्या बोलते हैं, सिंगापुर के लिए सोचा है कि न्यूजीलैंड के लिए सोचा है? I'm thinking about UK. Total expensive like 15 lakhs. If you did 3 months in Mumbai and 6 months in UK, also same. If you directly go UK for 9 months, also same process. But you have benefit if you did in Mumbai, then you don't have to give LITS test, English test for get UK visa. Otherwise, if you going directly there, then you have to pass LITS maximum 5 rank. Then they provide you visa for UK for study visa. So आशीष भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, और आशा करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे और कोरोना मुक्ति रहे, कोरोना मुक्त देश रहे हमारा। सो इसी बात पे ख़त्म करते हैं, और जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय भारत।